And I'll give you an example, an interesting example to show how this network works. And shockingly, एक नटराज का मूर्ति था पड़वूर से. It was robbed in 2004. And the robbers thought it was made of gold. अगर ये जैन पैंथियन में अष्टधातु बोलते हैं हम, हिंदू पैंथियन में पंचलोह बोलते हैं, but they are not, the silver and gold content is very, very minuscule, 0.003%. So people think it is made of gold and they melt it. How they melt it? They took an axe and cut the Nataraja's hand and melted it. And there was no gold in it. And they fought and hit the jeweler who melted it, thinking he took the gold, and he died. So there was a murder case with this hand-cut Nataraja. And surprisingly, this Nataraja with his hand cut left India via Nepal, went to Hong Kong. From Hong Kong was sent to London. In London, a restorer made a new hand, which is against all ethics of restoration because he could actually see the fresh axe marks. And then it went to New York. It was on sale for $3.5 million. Before Kapoor was arrested via an Interpol Red Corner notice in September 2011, 1 month before that, this Murti with a new hand made makes a miraculous appearance in Chennai. Passport nahi, visa nahi, it has gone all the way, grown a new hand, gone to America and come back with no records, no paperwork. And that's how porous our borders are. And lucky the US have actually extradited the restorer who did this in London, Neil Perry Smith, 3 months ago. He's now serving time in the US. But we have to understand that a Nataraj ka murti jo 200 to 300 kilos hota hai, somebody could do that. A similar example was a Varaha, which was by another smuggler from Rajasthan. And they actually tied a chain to the 4 legs and used a truck to pull, breaking the legs, and it weighed 5 tons. And abhi to Switzerland mein hai, and we've been trying to bring the Varaha Toota back. hua hai wo. And it's in a gallery in Switzerland where we are trying to bring back, because Switzerland, as you know, is a very opaque. The world's all the bad money and the bad objects are there. And interestingly, there are 55 free ports around the world. After Panama Papers, the rich and the famous don't want to put their money in banks because leak hota hai. We have the Pandora Papers and all that. They invest in art. So what happens is you can, like bank or locker hota hai, a free port mein you can buy a room, you rent a room and you can keep it for years. We have had cases where 20 years and 30 years some rooms are never opened. And you want to pay $1 million to your friend, you just move one artifact to his room and the transaction is over. So this is another way where the rich and the famous beat the law enforcement. So ये तस्करी स्मगलिंग होती कैसे है, मतलब एग्जैक्टली क्या मेथड होता है इसको ले जाने का बाहर? So there are 3-4 methods how they do. पहले तो diplomatic bag में जा रहा था, वो returning diplomats, diplomatic immunity 60s और 70s में diplomatic bag was the most popular method. Later क्या हुआ कि they employed local craftsmen to make fakes. अच्छा. And they वो ASA की जगह फेक को देखेंगे, नॉन एंटिक्विटी सर्टिफिकेट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट लेके ओरिजिनल को एक्सपोर्ट कर देंगे. द कस्टम्स ऑफिसर वुड नॉट बी एबल टू. अच्छा, तो मतलब वो क्या करते थे, फेक बनवा के और उसको दिखा देते थे कि एसआई को कि हमको सर्टिफिकेट दे दो एक्सपोर्ट का. फेक का एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेट बनवाते थे और असली मूर्ति को बाहर ले जाते थे. सो इन 2002 अ फार्म हाउस वाज रेडेड दिल्ली में, वहाँ वामन गया. उस रेड में in the farmhouse in Delhi, they recovered 840 murtis. About 430 were original and over 400 were fake. And incidentally, he is also one of the reasons मैंने एक किताब लिखा कि वामन was acquitted for want of evidence in 2013, क्योंकि उनके पर आरोप था कि वो 10,000 के ओवर. क्या नाम है उनका? वामन गिया. हाँ. अच्छा. उसको आरोप था वहाँ 2002 केस में 10,000 और मूर्ति सोथबीज लंदन के कोलूशन में सेल किया. Until 11 years, they couldn't bring back even one murti of the so-called 10,000, and Rajasthan court acquitted him. So I think. तो अभी वो फ्री है? हाँ. जेल में भी नहीं है और उसके घर में मिली थी ये? हाँ, फार्म हाउस में. इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा, मतलब और क्या चाहिए आपको? इट्स लाइक कोर्ट रेड हैंडेड. ऐसा तो केस we have much before also linked to Bollywood as well. There was a Bollywood
प्रोड्यूसर, अच्छा। उसके फार्म हाउस 1980s में रेड हुआ, वहाँ पे 130 एंटीक्स मिले. सो इंडिया हैज अ वेरी पुअर success rate in prosecuting heritage criminals because our law is very weak. So you'll be surprised to know that we don't even have a separate section for heritage crime, and the only section is IPC 380, जो which is घर में चोरी होने का है. and the maximum penalty is 3,000 rupee fine and 7 years. And in my home state, in 1993 एक special amendment ले आए तमिलनाडु में, वहाँ पे मंदिर में चोरी हुई तो 3.5 years, घर पे चोरी हुई तो 7 years. So in fact, if somebody मतलब घर पे चोरी होने का ज़्यादा पनिशमेंट है, मंदिर से चोरी करो तो कम है. हाँ, and that amendment still stands. तो और कोई मेथड्स जैसे आप बता रहे थे कि क्या हाँ, फिर now they become more blatant. For Kapoor's case, वो कैसे करता था? सुभाष कपूर क्या करता था? so they used to send to Hong Kong. अच्छा. So what happens is they underdeclare the invoice. A naive brassware, a garden furniture, they declare it. They send it to Hong Kong. Hong Kong में there's a host of these intermediary art transportation companies. The buyers from Europe and America fly to Hong Kong, and वहाँ पे they inspect it, and if it requires any correcting, restoration, they send it to London for restoration. So the underdeclared value is what the exporter will get paid. ये जो to fly under customs radar, ये customs declaration में invoice value को से 8,000 9,000 ही डालेंगे, वही मिलेगा banking channel से. So वापस the balance comes in through हवाला from Hong Kong. अच्छा. And sometimes they even export it directly air freight में, they declare it, and there is collusion. अगर कोई 1 million they buy, obviously the money goes down the chain, and unfortunately we've not yet cracked a lot of the other. That's why I said the collecting lobby cabal and the pipeline is still active. तो ये तो पता चल गया कि कैसे एक्सपोर्ट करते थे. वहाँ पे सब कॉन्टैक्ट्स रहते होंगे, कस्टम्स में भी, आपका बाहर एक्सपोर्ट्स में भी. लेकिन ये लाते कहाँ से थे? तो कैसे वहाँ से चोरी कैसे होती थी? क्योंकि अगर आप मंदिर से ला रहे हो तो आपके पास भाई गांव में कोई मंदिर है तो लोगों को दिखना चाहिए ना कि अरे कल मूर्ति थी आज नहीं है, तो चोरी का तो कम से कम फाइल करना चाहिए रिपोर्ट. we have कोई जो dilapidated ruined temple है, वहाँ से ये लोग उठाते हैं. But in many places in the 1970s, 1956 में I've seen the first case wherein they made actual fakes and replaced it in the temple. Oh. So if you replace them, in fact this was the one that we cracked in Oxford, Ashmolean Museum. When I went there, I knew it was from a temple, and we wrote to the temple. The temple said, "नहीं मूर्ति हमारे पास है." So the fake was still worshipped in the temple when the original was already exported and it's currently outskirts of London. And then when we went and checked, and this was in practice for almost 30 years, from 1957, 58 May, I think there was a racket where they were making fakes. And this is in Rajasthan, Gujarat. We've seen the same modus operandi in Madhya Pradesh, wherein for the trained eye, it's easy to spot, but for a novice, maybe, but I find it hard to believe. लेकिन मंदिर का जो प्रीस्ट है, अब जैसे आप कोई भी मूर्ति होती है, जब रोज उसकी पूजा हो रही है, तेल भी चढ़ता है, Definitely they will know. तो उनको तो मतलब यू कैन सी द मूर्ति ऑल्सो कि ये अभी से चोरी हुई है या कितने साल पहले चोरी हुई है. जितना तेल लगा रहता है या बहुत सारी, मतलब कम से कम प्रीस्ट को, टेम्पल के प्रीस्ट को या लोगों को, गांव के लोगों को तो पता होना चाहिए. And maybe because there is political pressure or big wigs are involved, so they are scared. But as I said, we had a case in London, which is another mystery for me. 1986 में एक मंदिर से मूर्ति चोरी हुई और लंदन में ट्रैक हो गया. A team from India went to London. मेट्रोपॉलिटन पुलिस के साथ जॉइंट रेड्स किया. एमरल्ड आर्ट गैलरी नाम था वो गैलरी का. उन्होंने एक नटराज का मूर्ति को किम्बल म्यूजियम अमेरिका को भेज दिया. एंड इन द रेड विच इज कवर्ड इन इंडिया टुडे, 1986 में 241 मूर्तिज वर सीज्ड फ्रॉम द गैलरी. They went and raided the home of the owner. They found 40. So London में 281 murtis were seized in 1986. This one murti that was sold to Kimball Museum came back to India. And then nobody knows what happened.
मेट्रोपॉलिटन पुलिस के पास दिस रेड का पेपर्स मिसिंग है. इंडिया में ऑफ द ऑफिसर्स ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया व्हिच इज रिपोर्टेड इन द पेपर्स मिसिंग है. Nobody knows what happened to this 281 murtis that were seized in London in 1986. So there's massive cover-ups that have happened in the past. और आपने जैसे पुस्तक में भी लिखा है कि किस तरीके से जो तमिलनाडु आइडल विंग है, स्पेशल फोर्स है, वो तो 1980 में 10,000 की थी या कितने हजार लोगों की थी, हजार लोगों की थी, और उसके बाद 2012 तक आते आते 3 लोग रह गए थे उसमें. हाँ. लेकिन उसमें एक अच्छे ऑफिसर थे सेल्वराज करके, जिन्होंने काफ़ी मेहनत की केसेस पे काम, सुभाष कपूर को भी अरेस्ट करने से पहले. लेकिन इसमें एक और ऑफिसर थे जो उनके जूनियर थे, कादर बाचा. उसका वो इसमें इन्वॉल्व थे सुभाष कपूर के साथ. आइडल विंग में जो काम कर रहा है, जो रेड मार रहा है इन सब जगहों पे, वो बंदा इसमें इन्वॉल्व है. And he was selling idols as well. And what is interesting is we chanced on it by chance. जब सुभाष कपूर का अरेस्ट हुई स्टुटगार्ट एयरपोर्ट में, जब वो इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस के बाद 2011 सितंबर में पकड़े गए, they fought the extradition. For 1 year he was in Germany before India fought the extradition, brought him. So 2012 में वो इंडिया आ गए. In this 1 year he wrote handwritten notes via his lawyer and sent it to his gallery manager in America. अभी Homeland Security investigation में we saw those handwritten notes. उसमें वो लिखा है hide the 2 dancers and consorts in my closet. माने कि वो दो नटराज और उमा है, उसको hide करो, मेरे ऑफिस में है. एंड देयर उसने लिखा है कि कादर बादशाह को बोल, अगर मैं इंडिया आ गया तो आई एक्सपोज कर दूंगा, सब नेटवर्क को एक्सपोज करेगा. सो या सैडली इट हैपेंड. एंड subsequently after we exposed in the book, the officer who has been formally charged, and in fact he couldn't be tracked for 2 months. Later they caught him.